students, welcome back to my lectures of class 11 physics. We are studying our chapter motion in a plane, and here in this video we have another topic, that is the resolution of vectors, and it's a very important topic. This topic you will use here in class 11th as well as in class 12th. So I request you all to understand this topic very carefully. First of all, what this resolution of vectors is. The resolution of vector is simply the splitting of vector along the coordinate axis. That means जो हमारे पास एक वेक्टर है उसका जो इफेक्ट होगा वो दोनों एक्सिस के अलोंग होगा, दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग द वाई एक्सिस. So for this, let us consider that we have the two axes, the two coordinate axis. This is x axis, and here we are representing it with I cap, and we have the y axis which we are representing it with the j cap. Okay, here we have any vector. This is the vector A. Okay, and the points for this vector, that is ax and ay. So I can write this vector A is equals to ax I cap plus ay j cap. So here we have represented, this is the component ax which is along x direction, that's why I have written it as I cap, and this ay that is along the y direction, that's why it is j cap. So this A is equals to axi plus ay j. मतलब ये जो वेक्टर है ये दोनों डायरेक्शन के अलोंग क्या हमने इसको स्प्लिट कर दिया, दैट इज अलोंग दी एक्स एक्सिस एंड अलोंग दी वाई एक्सिस, दैट इज ax एंड ay. तो यहाँ पर जो ये वेक्टर A है इसका इफेक्ट क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ax और ay की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट दिस ax इट इज अप टू हियर, दिस ax, दिस इज एंगल 90 डिग्री एंड दिस वी आर अज्यूमिंग एंगल टू बी थीटा. इन द सेम वे हियर this distance, that will be ay. Okay, now in this particular triangle, this is a, that is the magnitude. Okay, so here in this triangle, this is the base and this is hypotenuse. Okay, so here in this triangle, if we want to find the base, so we can use cos theta. So I can write this cos theta is equals to base upon hypotenuse. This base, that is ax upon hypotenuse, that is simply a. So I can write this ax is equals to a cos theta. Okay, in the same way, if you want to find the relation between the hypotenuse and the perpendicular, here this ay and this length, they both are exactly same. So I can find this sin theta, that is equals to perpendicular upon hypotenuse. This perpendicular is same as ay, that is ay upon hypotenuse, that is simply a. So I can write this ay is equals to a sin theta. It means कि जब भी कोई हमारे पास एक वेक्टर हो उसको आपको अलोंग एक्स एक्सिस रिजॉल्व करना है. तो एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर जो ax है आप इसको लिख सकते हो a cos theta. You have to always use the cos component along the direction or along the axis where we have angle theta. और जहाँ पर theta नहीं है, that will be the other axis, and this ay you can write it as a sin theta. Okay, so this is how we can resolve the two vectors along the two direction. जहाँ पर थीटा हो वो cos component हो जाएगा और जहाँ पर थीटा नहीं है वो क्या हो जाएगा, it will be sin component. Okay, now here we can write this ax and ay here. So I can write this a is equals to a cos theta I cap plus ay sin theta j cap. This is the vector which we get after resolution of vectors. Okay, now if I want to find its magnitude, then how we can find its magnitude? हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले ली, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं. Okay, now what I will do, I will square and add both of this. मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ax square प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे ay स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. क्या किया यहाँ पर, इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया, we have squared it and then we have added both the equations. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. यहाँ से जब a स्क्वायर कॉमन लेंगे विल गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1. तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर. इट मींस आई कैन राइट दिस a इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. ओके, सेम थिंग, मतलब हमें यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा, we will square both of these distances, and that is simply Pythagoras theorem. Okay, so in this way we can find the resultant magnitude and we can resolve the vectors along the two components, that is along the two axes, x axis and y axis. And remember one very important thing, जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा वो वेक्टर बनाएगा उस डायरेक्शन के अलोंग हमेशा हमारे पास
कॉस कंपोनेंट रहेगा, और जिस डायरेक्शन या जिस एक्सिस के अलोंग हमारे पास थीटा एंगल नहीं रहेगा, वहां पर जो रिजोल्यूशन होगा दैट विल बी अलोंग द साइन कंपोनेंट. Okay, so here it will be a cos theta and here will be a sin theta. And here if you want to find the direction of the resultant one, you can find it. How we can find the resultant direction? That is, we can use this tan theta. Okay, this tan theta equals to perpendicular upon base. This perpendicular that is ay and base that is ax. So the value of ay that is equals to a sin theta upon a cos theta. This gets cancelled. मतलब sin theta upon cos theta कितना हो गया? Tan theta. So that's why whenever we are finding the direction, then we are using the property of tan theta. Okay, so here to find the value of theta angle, we can simply use tan inverse ay by ax when you have the both components, that is ay and ax. So in this way you can find the value of angle theta. So this is all about the resolution of vectors. In the next video we will see the application of resolution of vectors.